हे गाइस, तो बेसिकली इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आप अपने क्रिएट किए हुए डेटा का चार्ट कैसे बना सकते हैं। चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, एनी काइंड ऑफ द चार्ट आप बनाएंगे कैसे, उसके बारे में अब मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक्सेल के अंदर आपको एक डेटा बनाना है। ओके, वो डेटा चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे आप स्कूल से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, किसी भी टाइप से रिलेटेड आप डेटा बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा एक सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कितने मार्क्स मिले हैं, उस हिसाब से मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चार्ट क्रिएट करूँगा। ओके, सो नो रिवॉर्ड दैट, सो प्लीज वेट एंड वॉच। West Coast chill with a cruiser's pride. Barbecue, smoke in the air, catch the scent. Oh, smells good. Chilling on the hood where all the time gets spent. From the boulevard flip to the beach we went. Yeah. Hustle, smooth talk, can't pay no rent. Let the energy roll. Flip a coin on the scene, let the summer unfold. Snapping fingers at the homies, yup, we in control. Cause around here we spit life in gold. Retro threads, rocking top down in the breeze. Funky flow, gliding, doing just what we please. Catch the sunset rays, dripping orange with ease. It's a West Coast anthem, living free like the seas. The shore, sun's on the scene. Oh yeah. Palm trees swaying, we keep the chrome clean. Shades on my eyes, feeling real supreme. Baseline bumping like you're living a dream. Let the good vibes ride. Talk box screaming while the sun collide. Groove all day, let the rhythm decide. West Coast chill with a cruiser's pride. Barbecue, smoke in the air, catch the scent. Oh, smells good. Chilling on the hood where all the time gets spent. From the boulevard flip to the beach we went. Yeah. Hustle, smooth talk, can't pay no rent. जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया। ये पूरा डेटा मैंने स्टोर करने के बाद अब मुझे चार्ट क्रिएट करना है। तो इंसर्ट मेन्यू में जाऊँगा और सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है आपको। जैसे ही मैं डेटा सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट मेन्यू में से चार्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस चार्ट ऑप्शन में सबसे पहले मैं पाई चार्ट क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट ऑप्शन में से पाई चार्ट कोई भी जो मुझे पसंद आ रहा है मैं सेलेक्ट करूँगा और मेरा ये पाई चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। अगर मुझे इसका स्टाइल चेंज करना होगा तो ऊपर एक मेन्यू आता है चार्ट डिजाइन का, वहाँ से मैं क्लिक करके कोई भी टाइप्स का चार्ट डिजाइन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं किसी भी टाइप्स का चार्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अगर सेम डेटा का अगर मुझे और भी चार्ट क्रिएट करना है सो इट्स ऑल्सो पॉसिबल।
दैट सेम थिंग्स यू नीड टू रिपीट वंस अगेन कि आपको पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, अगेन चार्ट में जाना है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर चार्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको सपोज दैट कॉलम चार्ट चाहिए तो मैंने यहाँ से कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया और मेरा कॉलम चार्ट बनके रेडी हो गया। अगर आपको लाइन चार्ट चाहिए सो दैट्स ऑल्सो सेम थिंग यू नीड टू रिपीट वंस अगेन कि आपको फिर से उस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद फिर से इंसर्ट मेन्यू में जाना है और वहाँ से आप लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हो। अब ये सारे टाइप्स के फीचर्स है जिसके थ्रू आप चार्ट्स बना सकते हो अपने किसी भी टाइप्स के डेटा का, बस वो एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से डेटा इंसर्ट होना चाहिए। और चार्ट स्टाइल्स कभी भी चेंजेस करना हो तो सारा प्रोसेस आप चार्ट डिजाइन मेन्यू से आप चेंज कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स कि आप चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने डेटा का, एंड वेरी इंटरेक्टिव। सो प्लीज शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।